The host has started broadcasting the meeting on YouTube. Hello, everyone. Good afternoon. Good evening, rather. I'm Sayukta from Prostate Wellbeing Team, and I'm sure all of you must be keeping good health. Today, we are going to discuss a very important topic, that is benign prostatic hyperplasia, BPH. So, BPH is the non-cancerous enlargement of the prostate. Usually, it begins in 50s in men, and in many men may cause obstruction to urine flow. Many men have to get up and go to the toilet at night, and this is one of the most troublesome aspects of this condition as it makes them tired during the day. Having to urinate frequently during the day, sometimes with a sense of urgency, can also be tiring for patients and can make traveling or attending events such as the theater, cinema, etc. more difficult. A doctor, such as a urologist, can treat this condition and help the patient to get some relief. So, to shed more light on the subject and guide us on what's right for diagnosis and treatment of BPH, today we have with us renowned urologist Dr. Ankur Sangal. He is MBBS, MS, DNB Urology. He has a rich experience and hands-on expertise in stone management as well as in treating urological problems. He is currently practicing at Sanskriti Clinic, Ballupur Chowk, Dehradun, Uttarakhand. One more branch of Sanskriti Clinic is there at Shamli, where Dr. Ankur Sangal is also, imparting his duties. Dr. Ankur has experience in the field of urology and carries out the diagnosis and treatments with utmost precision and efficiency, ensuring that patients' health is in safe hands. A very warm welcome to you, Dr. Ankur. Thank you, ma'am. And so, doctor, today we are going to talk about BPH, benign prostatic hyperplasia, most commonly known as prostate enlargement, benign prostate enlargement. अब लोगों को सबसे पहले तो मेरे ख्याल से ये जानना है कि prostate आखिर क्या होता है? What is prostate? We know कि males में prostate एक organ है, इसका क्या काम है, क्यों ये important है? Ma'am, basically prostate is a organ which is found only in males. Its main purpose is to add substance in the ejaculatory fluid, and this is a walnut-shaped structure which is present below the bladder, and our urine pipe, which is known as urethra, it passes through the prostate. So it is basically a gland which helps in adding the fluid in our seminal secretions. And after the age of 50 years, generally this prostate gland, it keeps on increasing in size, and which leads to several kind of symptoms like you just enumerated, like which can be increased frequency of urine. There can be nocturia, and patient can have urgency of urine. So there are several kind of symptoms which this prostate enlargement can lead to. Right. We'll also talk about these symptoms in detail. But before that, as you said, that it's a very, age-related, a very natural process of aging, we can say, enlargement of prostate. जैसे कि हम जानते हैं कि एक एज के बाद बाल ग्रे होंगे ही, graying of hairs. It is exactly like that. After a particular age group, after 50s or 60s, it is going to happen. Prostate enlargement is going to happen. So you can't change the fact. हाँ, लेकिन हमें पता है कि अगर हमारे बाल सफेद होते हैं या चेहरे पे रिंकल्स आते हैं तो सिर्फ हमारे ओवरऑल अपीयरेंस को फर्क पड़ता है, इसके अलावा इसका और कोई इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन क्या एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट के साथ भी ऐसा ही है कि सिर्फ वो एज के साथ बढ़ रहा है या उसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं? Definitely it can change your quality of life because there are several symptoms which can be attributed to this prostate enlargement, and it can definitely change your quality of life. Your social it can affect your social life as well. Generally, many patients who are affected with incontinence of urine because of prostate enlargement, they generally avoid any social gathering and going to any relative's house just because of their leakage problem. So it is a very significant problem, those who are having incontinence. तो जैसा कि आपने initially कहा था, there are some symptoms, as I have also mentioned in the beginning initially, that urgency, frequency, these are some of these symptoms. लेकिन अब हम उन्हें थोड़ा लेंथ में समझने की कोशिश करते हैं डॉक्टर। तो क्या symptoms है और किस तरह से ये एक आदमी को ट्रबल करते हैं? Ma'am, basically prostate enlargement की वजह से there are two types of symptoms. One is storage symptoms and one is voiding symptoms.
एंड दीज सिम्टम्स आर कॉल्ड एज लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स. शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको लट्स बोलते हैं. तो पेशेंट कैन हैव स्टोरेज लट्स, पेशेंट कैन हैव वॉइडिंग लट्स. स्टोरेज लट्स में पेशेंट की कंप्लेंट्स रहती हैं बार बार यूरिन जाना, हर 10 मिनट में, हर 15 मिनट में यूरिन जाना, अर्जेंटली यूरिन जाना, या फिर नाइट में बार बार यूरिन के लिए उठना. दीज आर बेसिकली कैटेगराइज्ड इन स्टोरेज लट्स. सेकंड जो कंपोनेंट है दैट इज वॉइडिंग लट्स. उसमें पेशेंट को प्रॉब्लम होती है कि यूरिन स्टार्ट करने में उसको काफी समय लगता है, हेजिटेंसी, एंड ही हैज टू स्ट्रेन व्हाइल पासिंग यूरिन. काफी जोर लगाना पड़ता है. एंड द फ्लो ऑफ यूरिन इज वेरी पुअर. इट इज इंटरमिटेंट, रुक रुक के यूरिन आना, काफी देर तक खड़े रहना. जनरली दीज पेशेंट्स कंप्लेन कि हम लोग को 10 मिनट लग जाते हैं वॉशरूम से फ्री होने में. एंड इवन आफ्टर पासिंग यूरिन दे फील कि अभी भी ऐसा लगता है कि देयर इज समथिंग इनसाइड. सो ऑल दीज सिम्टम्स आर collectively categorized as lower urinary tract symptoms, and they can be grading is there basically, whether the patient is having mild symptoms, moderate symptoms, or severe symptoms. राइट. तो ये बेसिकली वो सिम्टम्स है जिनका हमें ध्यान रखना है, जो आपने सिम्टम्स बताए. क्योंकि जैसा कि शुरू में आपने कहा था डॉक्टर कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड जो ऑर्गन है जो कि मेल्स में होता है, उसी से यूरेथ्रा पास होती है. यूरिनरी ट्रैक जो है उसके एक तरह से हम कहें तो आजू बाजू जो है वो प्रोस्टेट होता है. तो क्या यही वजह है कि जब वो एनलार्ज होता है तो ऑफ कोर्स इट गिव्स सम प्रेशर टू द टू द पाइप, वी कैन से, and that's why these symptoms are there? Definitely. Basically, when prostate enlargement is there, it causes narrowing of the passage, narrowing of the urethra is there. So urine ki stream, it will become very thin and very weak, which leads to residual urine. Even after passing urine, even after prolonged standing for completing the act, 100 ml, 50 ml, 150 ml, some amount of urine will left behind, which is called residual urine. And it is all basically because of that narrowing of the passage, which was initially patent and very wide open. After prostatic enlargement, this passage becomes very narrow. आपने कहा था कि almond shaped organ होता है. It is basically walnut shape. एक अखरोट के जैसा ये स्ट्रक्चर होता है. बिल्कुल. और उतना ही बड़ा होता है. उतना ही बड़ा होता है. हाँ, लेकिन फिर जब वो एनलार्ज होने लगता है तो कितना एनलार्ज हो सकता है, मतलब कितने ग्राम्स तक वो पहुंच सकता है डॉक्टर? मैम, इट कैन इंक्रीज अप टू 200 ग्राम्स आल्सो, बट नॉर्मली हम लोग अपनी प्रैक्टिस में जो देखते हैं, सो इट लाइज समवेयर बिटवीन 60 80 ग्राम्स, 100 ग्राम्स, 120 ग्राम्स. बट वंस इन अ व्हाइल, कभी एक साल 2 साल में हमें 200 ग्राम्स, 150 सीसी इस तरह के प्रोस्टेट भी देखने को मिलते हैं. ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा डॉक्टर ताकि हम ये समझ सके कि कितना प्रेशर वो उस ट्रैक पे, उस पाइप पे डालता है जिससे यूरिन जो है हमारी बॉडी से पास होती है. तो ऐसे में अगर बहुत ज्यादा, मतलब ये मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि कई बार हम ये जो सिम्टम्स होते हैं इन्हें सहते जाते हैं एंड वी डोंट गो और कंसल्ट टू डॉक्टर. Many a times we associate these symptoms with age. बहुत ऐसे मेल्स हैं, हम सब जानते हैं कि in males, because this prostate enlargement thing is there, and after a certain age, as you said, after 50 it do enlarges. पर कई बार उनसे पूछो कि अरे ये सिम्टम्स है, आपने डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया, तो वो झट से बोल देंगे कि अरे ये तो एजिंग के साथ ये सब होता ही है. तो एजिंग का एक एस्पेक्ट है, या फिर मैं डायबिटिक हूँ तो ये होगा ही, या फिर मुझे थायराइड, हम इस तरह से चीजों को ले लेते हैं. तो ये जो मेरा क्वेश्चन है कि अगर वो 80 ग्राम्स, 100 ग्राम्स, 120 ग्राम्स, 200 ग्राम्स हो जाता है तो कितना ब्लॉकेज वो उस ट्रैक को कर सकता है? क्या कंप्लीटली यूरिन पास होना बंद हो सकता है? एक स्टेज ऐसा भी आ सकता है? डेफिनेटली मैम, डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स. इनिशियली टू स्टार्ट विद, पेशेंट को धीरे धीरे सबसे पहले नॉक्चूरिया, मतलब रात में बार बार यूरिन के लिए उठना, यूरिन का फ्लो कम हो जाना, जनरली ये सभी सिम्टम्स स्टार्टिंग फेज में रहते हैं. And after some time, after few years, when the prostate keeps on increasing in size and there is no, patient is not taking any treatment, तो एक समय ऐसा आता है prostate will increase in size and sometimes patient can land up in acute urinary retention. मतलब all of a sudden एक दिन उसका यूरिन रात में या कभी भी at the day किसी भी समय पे उसका यूरिन बंद हो सकता है. Then he has to rush to the hospital and get himself catheterized. So this can happen. यूरिन कभी भी ब्लॉक हो सकता है. And that's why it's so important to spread awareness about BPH. और आज का ये सेशन करने का हमारा जो मोटो है वो यही है कि हम लोगों को बता सके कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, बेनाइन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट एक बहुत आम सी बात है, बहुत कॉमन है, होता है.
लेकिन इसके बारे में अवेयरनेस होना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। आपको समझना चाहिए कि अगर फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, ये जो नॉक्चुरिया, ये जो सिम्टम्स डॉक्टर ने बताए हैं, अगर ये है तो इन्हें चुपचाप सिर्फ सहते नहीं जाना है। प्लीज डोंट सफर इन साइलेंस, इट विल डेफिनेटली हैम्पर योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। इससे तो आप बच ही सकते हैं, उसके जो फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस है उससे भी आप बच सकते हैं अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं। नाउ डॉक्टर, व्हेन अ पर्सन कम्स टू यू विद दीज सिम्टम्स, इमीडिएटली आपको पता चल जाता है कि ये एनलार्ज प्रोस्टेट का केस है, या फिर कुछ आप टेस्ट भी कराते हैं टू डायग्नोस? बेसिकली पेशेंट हम लोगों के पास आते हैं सिम्टम्स लेके, विच आर, जैसे मैंने आपको बताया कि लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स के साथ पेशेंट आया, एंड दिस लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स कैन बी बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ कॉजेस. इट कैन बी बिकॉज ऑफ प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट, इट कैन बी बिकॉज ऑफ स्ट्रिक्चर इन द यूरेथ्रा, यूरिन की नली में अगर कोई रुकावट या कोई सुकड़न है तो उसकी वजह से भी सेम सिम्टम्स होते हैं. कई बार पेशेंट का ब्लैडर अंडर एक्टिव है बिकॉज ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, या पेशेंट को कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, स्पाइन प्रॉब्लम, पॉट स्पाइन, टीबी स्पाइन है, या पेशेंट को कभी स्ट्रोक का एपिसोड हुआ है. तो ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है, दीज ऑल कैन लीड टू लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स. देन आफ्टर टेकिंग ए प्रॉपर हिस्ट्री, प्रॉपर पास्ट हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, then we come to a conclusion कि most likely this patient is having this lower urinary tract symptoms because of prostatic enlargement. So the first thing which we can do in clinic, and which I think most of urologists they tend to do, is digital rectal examination. Digital rectal examination is basically to insert a finger in the rectum of the patient to feel how much is the size of the prostate, what is the consistency of the prostate, is there any hardness, कोई nodularity, कोई गांठ वगैरह ऐसी feel हो रही है, या it is normal consistency prostate, which will help us to know what is the size of the prostate. Are we dealing with a simple prostatic enlargement, or there is any chances of having malignancy, tumor also? So digital rectal examination is something which is very important and should not be eliminated while evaluating a patient for lower urinary tract symptoms. And after that, there are n number of tests like uroflowmetry, urine routine test, and most importantly, ultrasonography, which will tell us exactly what is the size of the prostate, how is the bladder, health of the bladder, is there any pressure, back pressure changes in the kidney, and how much is the residual urine. So ultrasound is very important test, and that gives us fair idea about most of the things which are going inside. अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो अभी आपने बताई, क्योंकि हम लगातार बेनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर बेनाइन है तो वो मैलिग्नेंट भी हो सकता है। मतलब एक अगर बेनाइन है तो डेफिनेटली एक दूसरा मैलिग्नेंसी का चांसेस भी है, कैंसरस भी हो सकता है। सो you know, what's the ratio, doctor? How many times you see patients with malignant enlargement of prostate? उसे भी हम थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे। Now, I think out of 100 patients who are coming with lower urinary tract symptoms, 2 to 3 patients will turn out to be having malignant prostate. Okay. But one should be very suspicious of diagnosing this. And the symptoms are same? Symptoms are same. The added symptoms can be generally prostatic CA prostate patients who is having metastatic prostate, metastatic CA prostate. These patients will also complain of they're having multiple sites bony pain. These patients will complain of typical pain in the back, lower back, in the hip region, in the long bones. So if patient, apart from telling about the lower urinary tract symptoms, if he's saying that he's having multiple bony sites pain, his appetite is reduced, he is losing weight, his general condition doesn't seem like normal, in that case you should be suspicious, do DRE, do a PSA test, and come to a conclusion whether you are dealing with a normal prostate or some sort of malignancy can be there. बिल्कुल, तो इसलिए तो और भी हमें इन सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना है। अगर ये सिम्टम्स है तो प्लीज डॉक्टर के पास जाइए। एक तो आपको पता चल जाएगा कि अगर बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया है, अदरवाइज आप रूल आउट भी कर देंगे कि ठीक है ये कैंसरस नहीं है। अच्छा, जो कैंसरस एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट होता है डॉक्टर, कहते हैं कि ये बहुत ही एक स्लो कैंसर है। मतलब कैंसर के बारे में अदरवाइज ये कहा जाता है कि बहुत ही फास्ट स्प्रेडिंग सेल्स होते हैं, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं। लेकिन एक थोड़ी राहत की बात ये है कि इन केस अगर कैंसरस हुआ तो वो थोड़ा स्लोली स्प्रेड करता है। इज दैट करेक्ट? Yes, definitely, ma'am. Out of, I think, all the cancers in genitourinary system, I think prostate cancer is the best. Though any cancer is not good, but still prostate cancer is best out of all these, because life expectancy is very much. Even if you are diagnosed with CA prostate, then you can expect that patient will live for approximately around 5 to 10 years. Even in stage 4, when patient is having metastatic,
every site, in every bone there is mats. Even then, patient will survive for about 1 to 2 years. Okay. So this is अच्छा, something. If a patient is diagnosed with a stage 1 CA prostate at the age of 70 years, so you can relax, you can tell the patient that for next 10 years you will be there, nothing is going to happen. So this is something very good regarding this tumor. या बिल्कुल एक सिल्वर लाइनिंग तो है ही, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि जितना जल्दी डिटेक्ट हो जाए, चाहे वो बीपीएच है या वो कैंसरस एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट हो, जितना जल्दी डिटेक्ट हो जाए उतना इजी ट्रीटमेंट हो जाता है, उतनी जल्दी हमें आराम मिलता है। और इसके लिए बहुत जरूरी है अगेन कि हम ये सिम्टम्स इग्नोर ना करें। और बार बार मैं ये इसलिए कह रही हूँ, उस पे एम्फेसिस इसलिए दे रही हूँ बिकॉज ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है। Again, as I said before as well, एज के साथ हम इन सिम्टम्स को एसोसिएट कर लेते हैं और हमें लगता है कि ये तो अब होना ही है, हमें तो इनके साथ, इन सिम्टम्स के साथ रहना ही है। People stop socializing, people stop going out, people stop mixing with people, and they'll make their life very miserable, but they won't go or meet or consult a urologist. यहीं पे हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो हमें भी एज अ फैमिली मेंबर, आई थिंक हम भी ये कर सकते हैं कि अगर हमारे फैमिली में कोई मेंबर है जिनको हमको लग रहा है कि ये सिम्टम्स हैं, please convince them, take them to the doctor. That's what we can do. Right, Ma'am, this scenario is very common in small cities like tier 3 cities and small towns and districts. This scenario is very common. There will be, in each and every house, there will be a elderly patient who will be suffering with these symptoms, and they are not concerned. They will be thinking that, okay, this is age related problem, their bladder is weak or something like that. But this is something which needs to be addressed, and for which consultation of a urologist is mandatory. तो अगर ये सिम्टम्स है तो प्लीज डॉक्टर के पास जाइए। अच्छा, एक बात जो आपने अभी डॉक्टर बताई कि जब हम कैंसरस एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट की बात करते हैं तो उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, मतलब हमें पता है कि ये उतनी जल्दी नहीं फैलेगा, और अगर जल्दी पता चल जाए तो स्लो ग्रोइंग ट्यूमर बेसिकली। राइट। तो ऐसे में क्योंकि अगेन हम एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट तभी बात कर रहे हैं जब हम एज को साथ इसको रख रहे हैं। वी आर सेइंग कि वो होता ही है एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट 50 के बाद। तो अगर किसी 70 ईयर ओल्ड को कैंसरस एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट हुआ या कैंसरस प्रोस्टेट का पता चला, तो क्या जो ट्रीटमेंट है वो कॉम्प्लिकेटिंग हो जाता है? बिकॉज वी नो आफ्टर सर्टेन एज सर्जरीज और कीमोज, रेडिएशंस, दीज they don't work, और कई बार पेशेंट ले नहीं पाते हैं। तो ऐसे में इस केस में क्या करते हैं? Ma'am, basically all these things depends on how well is the patient and how much is the life expectancy. If you feel that the age of patient is 70 years but he is fit enough and he is going to live another 20 years or 15 years, then definitely you are supposed to start the treatment. It can be either in the form of some surgery, some radiation, or some hormonal therapy. But any patient who is having a lot of comorbidities and his life expectancy seems to be like 2 to 3 years only, in that case generally it's better not to disturb the patient. This is what I feel. But this is a strategy basically where on watchful waiting, right, where the intention of the treatment is not to give any treatment. The intention is just to keep the patient, you just keep watching the patient when the life expectancy is very low or the tumor is very low grade. ओके। अच्छा, बीपीएच की वापस हम अगर बात करें डॉक्टर, तो क्या ये एसिम्प्टोमेटिक भी होता है, सिम्टम्स नहीं है, लेकिन अगर किसी तरह से कोई डॉक्टर के पास पहुंचा, कोई स्कैन किया तो पता चला कि नहीं प्रोस्टेट तो काफी बढ़ गया है साइज में, ऐसा भी हो सकता है? This scenario is very common. Okay. There are many patients who will be having 80 grams of prostate, but they won't be having any symptoms. Or they may be having symptoms, but these symptoms are not bothersome. For a patient, getting up twice at night can be bothersome, but in another patient, getting up 6 times in a night cannot be bothersome. That depends on what quality of life they desire. So there are many patients who can be, despite of their enlarged prostate, they can be asymptomatic or the symptoms cannot be bothersome. It can happen definitely. तो ऐसे में क्या करना चाहिए? मतलब क्या किसी को, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि उनको सिम्टम्स होंगे नहीं होंगे, तो क्या उन्हें डॉक्टर के पास एक चेकअप के लिए जाना चाहिए? और इज इट ओके टू हैव अ सिम्प्टोमेटिक एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट? उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है? Basically few tests are there which will tell ki whether to intervene or whether to start any treatment, or you can just left
this patient on follow. Basically, PSA, urine flow, and how much is the residual urine. These are the few tests which will tell you this patient needs treatment, some sort of medicines he require, or you can just leave him. एक हमारे व्यूअर हैं अजीत सिंह 30 इयर्स ओल्ड है और ये लिख रहे हैं कि आई हैव बीन एक्सपीरियंसिंग सम यूरिनरी सिम्टम्स लेटली और आई डोंट एक्सपेक्ट टू हैव एनी इश्यूज लाइक दिस बिकॉज वो 30 इयर्स ओल्ड है. Could it be related to benign prostatic hyperplasia? हालांकि क्या symptoms है ये उन्होंने mention नहीं किया है. Ma'am, basically, see, prostatic enlargement is all age related, but it is not that ki at 30 years of age, no any other disease can affect prostate. There are many things which can mimic the symptoms like prostatomegaly, which can be prostatitis, normal simple UTI can be there, some bladder stone is there. These will produce symptoms which are similar to prostatomegaly. But at the age of 30 years, having a significant prostatic enlargement is not at all possible. Right. अच्छा डॉक्टर BPH में फैमिली हिस्ट्री का कितना इम्पोर्टेंस होता है? It is very significant. According to my experience, if suppose अगर आपके दादा को 70s में prostate आया, then your father will have your prostate enlargement at the age of 60s, and now the son will have prostatic symptoms and enlargement at 5th decade. So in each successive generation, you can just subtract 1 decade. Okay. 10 साल पहले आपकी नेक्स्ट जनरेशन में वो बीमारी आ जाएगी. This is what I have observed in last few years. Right. अब ऐसे में अगर हमें पता हो कि हमारी फैमिली हिस्ट्री है, लाइक यू नो ग्रैंडफादर को, फादर को एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट हुआ, is there any way, I mean prevention तो शायद नहीं होगा because हम बहुत commonly कहते हैं prevention is better than cure. Prevention अगर ना भी हो, क्या हम उसे delay कर सकते हैं? Can we prolong it anyway? Definitely मैम. ऐसे पेशेंट जिनको फैमिली हिस्ट्री है, पॉजिटिव सिग्निफिकेंट फैमिली हिस्ट्री है, उनके दादा को, ताऊ जी को, अंकल को या फादर को अगर प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट की हिस्ट्री है, सो बेस्ट इज एट द एज ऑफ 40 years get your routine ultrasound done to see what is the prostate size, get a PSA done, and if some symptoms have started, you can get a urine flow also checked up. Okay. And if your PSA is normal, then at least for next 5 years and 10 years, there is no need to repeat your PSA again. Right. PSA टेस्ट का जो जिक्र है आपने से पहले भी किया था जब हम प्रोस्टेट कैंसर पर बात कर रहे थे, कैंसरस प्रोस्टेट पर बात कर रहे थे. क्या ये टेस्ट है डॉक्टर? मैम, PSA इज बेसिकली प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जो कि हमारे ब्लड से सैंपल लेके वी गेट द रिपोर्ट. और प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन इज अ सिक्रीशन व्हिच कम्स फ्रॉम द प्रोस्टेट और इट्स नॉर्मल वैल्यू इज लेस देन 4. अगर ये 4 से ज्यादा है और योर DRE, digital rectal examination, is suspicious, in that case further test करके you have to rule out or prove that patient is having CA prostate. So it has very much clinical significance. But ऐसा भी नहीं है कि PSA बढ़ा हुआ है तो it is only because of CA prostate. There are many other conditions जिनमें PSA बढ़ जाता है, जैसे कि prostate, अगर prostate का size बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, in that case proportionately PSA will rise. Second, if patient is having UTI, urinary tract infection, in that case PSA will increase. अगर patient का अभी recent कोई instrumentation, कोई catheterization की history है, it will lead to increase PSA. So before doing workup for CA prostate, you should rule out other possibilities which leads to increment in the prostate. Fair enough. We have one more viewer with us, Bhavesh Mittal. His question is that I have noticed that I have to urinate more frequently. Sometimes it's a bit difficult to start urinating, and I have had a weak stream as well. It feels like I can't completely empty my bladder when I do go for it. So, what's your take on this? First of all, ये जिन्होंने mention नहीं किया है. Actually, all these workup and all these differential diagnosis starts with the age of the patient. If patient is in the elderly group, then your first diagnosis which comes in your mind is prostatomegaly. But if your patient is in a younger age group, then the first thing which comes in your mind is urethral stricture, some UTI, some stone problem. So there can be many differential diagnoses.
बिल्कुल। और भावेश, ऐसे केस में आई थिंक यू शुड गो एंड कंसल्ट अ क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट नियर यू। तो उनके बारे में पता कीजिए कौन आपके आसपास एक अच्छे क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट है, प्लीज उनको दिखाइए। सेल्फ मेडिकेट मत कीजिए, होम रेमेडीज मत कीजिए। दीज डेज डॉक्टर बिकॉज देयर आर सो मेनी इन्फ्लुएंसर्स ऑन सोशल मीडिया, वेरियस प्लेटफॉर्म्स, और उनके पास हर मर्ज की दवा है। तो वो बहुत सारे क्विक फिक्सेस, होम रेमेडीज ऐसे बता देते हैं, और कई बार हम लोग सालों साल तक उन्हें फॉलो करते रहते हैं, एंड बाय द टाइम वी रीच एंड गो इन फ्रंट ऑफ अ डॉक्टर, तब पता चलता है कि अगर हम पहले चले जाते तो बहुत आसानी से हमारा इलाज हो जाता। Then if treatment of the prostate is delayed, it can lead to chronic renal failure. It can lead to chronic retention of urine. The emptying efficiency of the bladder will go with time. So it's best if you start your treatment timely and at perfect place with a urologist. Right. So it's very important to do not ignore these symptoms. If you have these symptoms, please go and consult a doctor. Don't go for home remedies, quick fixes, etc. Please go to the right person, which is a qualified urologist. Deepak Saxena, एक और हमारे व्यूअर हमारे साथ जुड़े हैं. Is there a family history of prostate issue, and should I be concerned about the genetic predisposition of BPH or prostate cancer? दो इस पे अभी हमने बात की है, बट फिर भी नहीं आप आंसर करना चाहेंगे ठीक है, डॉक्टर? जस्ट नाउ अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, अगर आपकी फैमिली में प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट और प्रोस्टेटिक सिम्टम्स या प्रोस्टेटिक सर्जरी की हिस्ट्री है, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू हैव दिस प्रॉब्लम। और वो भी जिस एज में पहले आपके फादर ग्रैंडफादर को हुई है, उससे 10 साल पहले आपको होने के पूरे चांसेस रहेंगे। सो अगर आपको कुछ भी ऐसे सिम्टम्स जिनको हम LUTS बोलते हैं, लट्स हैं, इट्स बेटर यू गो टू अ यूरोलॉजिस्ट एंड कंसल्ट एंड टेल हिम दैट आई एम हैविंग दिस प्रॉब्लम। ओके। और डॉक्टर, अब बीपीएच के ट्रीटमेंट पर हम बात करना चाहेंगे। व्हाट ऑल ट्रीटमेंट ऑप्शंस आते हैं? Ma'am, BPH, depending on whether the symptoms are mild, moderate, and severe, and taking into consideration the other features like PSA, uroflowmetry, any back pressure changes are there. So there are multiple options available. There are certain indications for surgery which are fixed. If a patient is having recurrent infection, UTI, because of prostatomegaly, if the patient is having renal insufficiency, if he is having very frequent episodes of hematuria, or there is urinary retention twice or thrice, in these cases, best is to ask the patient to get surgery at the earliest. But if the patient is not having any indication of surgery, but he is bothered by the lower urinary tract symptoms, then there are various options which are available in the form of medicine. It comes with a single salt, which we say it can be either tamsulosin alone, or it can be tamsulosin plus dutasteride, or silodosin plus dutasteride. So it can be a single salt medicine, or it can be a combination. And there are other category, one third category of patients which are having very mild symptoms. In these patients, only some dietary modification, some lifestyle changes can even help for initial few years. Like a patient who is having very mild prostatomegaly, say his prostate is approximately 30-40 cc, and only mild symptoms are there, and he is not much bothered, only just starting nocturia 2 to 3 times in a night, he is going to washroom. In these patients, we can ask him that after 6 o'clock or just 3 hours before your bedtime, sleeping time, you should avoid or you should cut down your liquid intake. And before going to bed, you are supposed to go to a washroom. So, or you can avoid caffeine, you can avoid alcohol intake, excessive liquid intake can be avoided. These dietary changes can help those patients who are having mild symptoms. And for moderate symptoms or patient who is having literally bothersome LUTs, these patients can be prescribed medicines, which can be either a single salt or a double salt medicine. Right. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात आपने की, लिक्विड इनटेक की आपने बात की। हमारे यहाँ एक बात जो कही जाती है कि जितना हो सके पानी पियो, ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, एडिक्वेट वाटर पियो, ये हम कम कहते हैं, हम कहते हैं बहुत ज्यादा पानी पियो। तो इसको लेकर आपकी क्या थियरी है? बिकॉज अगेन देयर आर मेनी पीपल हु एंड अप ड्रिंकिंग a lot of water or liquid. Adequate liquid intake is basically somewhere between 10 to 12 glasses. मतलब 2.5 लीटर से 3 लीटर पानी अगर हम दिन भर में पीते हैं, सो दैट इज कंसिडर्ड एडिक्वेट। अब जिन लोगों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, जिनको रात को बार बार यूरिन के लिए उठना पड़ता है, तो उनके लिए सेंसिबल है कि आप अपने दिन के जो पानी की रिक्वायरमेंट है उसको आप डे टाइम में पूरा करें, स्टार्टिंग फ्रॉम द जब से आप उठे हैं और इवनिंग तक, बाई लेट इवनिंग 6 o'clock 7 o'clock तक आपको जितना पानी अपने दिन का लेना है वो ले लें, बट अवॉइड दिस लिक्विड लेट आवर्स।
रात में सोने से 2-3 घंटे 4 घंटे पहले अगर आप लिक्विड कम कर देंगे, सो आपका जो नॉक्चुरिया एपिसोड्स हैं दे विल कम डाउन। कई बार ये भी होता है कि हम जैसा कि आपने कहा कि सोने से 3 घंटे पहले लिक्विड इंटेक हमें कम कर देना चाहिए, रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। तो हमने कई बार हमारे घर में बड़े बुजुर्गों को देखा है कि वो करते हैं, लेकिन रात में जब वो उठते हैं वॉशरूम जाने के लिए तो वापस सोने से पहले फिर एक ग्लास पानी पीकर सोते हैं, फिर थोड़ी देर बाद उठते हैं। ये भी एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। इट्स वेरी कॉमन सिनेरियो। सो मैं ऐसे पेशेंट्स को तो यही बोलता हूँ कि अगर आप रात में उठते हैं तो आप कोशिश करें, अगर आपका गला बहुत ज्यादा ड्राई हो रहा है, सो इट्स बेटर यू टेक अ गल्प ऑफ वाटर, जस्ट एक घूंट पानी के लिए आपके गले में तरावट आ जाए एंड जस्ट कीप दैट, बाकी का पानी आप ऐसे ही रख दें। अगर आप पूरा ग्लास पानी पियेंगे देन इट इज फॉर श्योर कि 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद आपको दोबारा से उठना ही पड़ेगा। राइट। कई लोग सुबह उठ के भी एक बार में 1 लीटर 1.5 लीटर पानी पी लेते हैं, उनको लगता है इससे हमारा पूरा सिस्टम जो है क्लियर हो जाएगा। और फिर ये भी लगता है कि अगर 2.5 लीटर पीना है तो 1-1.5 लीटर तो हमने सुबह ही पी लिया था, तो अब पानी पीने की क्या जरूरत है। तो ये भी एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। अर्ली मॉर्निंग ज्यादा पानी पीना दैट इज गुड फॉर योर हेल्थ डेफिनेटली, क्योंकि बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स वगैरह रहते हैं वो सब वॉश आउट हो जाते हैं, आपकी बॉडी चार्ज अप हो जाती है। बट इट डजंट मीन कि आपको पूरे दिन की जो रिक्वायरमेंट है वो एक ही बार में पूरी कर लेनी है। बाकी रेस्ट ऑफ द डे आपका जो भी रिक्वायरमेंट है उसको भी आप ध्यान में रखते हुए पानी स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। सर्जरी की भी कई बार नौबत आती है। अगर हम बीपीएच की बात करें तो वो क्या है, कब नौबत आती है डॉक्टर? क्या-क्या सर्जरीज या नॉन सर्जिकल वेज हैं? क्या कुछ हो रहा है इस वक्त इंडस्ट्री में? मैम सर्जरी में बेसिकली अभी सिंस लास्ट 20 इयर्स, आई थिंक 20-25 इयर्स या उससे भी ज्यादा समय से द प्रोसीजर ऑफ चॉइस इज TURP। TURP मतलब ट्रांस यूरेथ्रल डिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, जिसको हम आम भाषा में या पेशेंट बोलते हैं कि दूरबीन द्वारा ऑपरेशन या फिर लेजर द्वारा ऑपरेशन, होलैप। तो बेसिकली 2 मोडेलिटीज आर देयर, आइदर यू गो विद द TURP जिसको हम बोलते हैं दूरबीन से ऑपरेशन, और यू गो विद द लेजर सर्जरी जिसको हम बोलते हैं होलैप। एंड द इंडिकेशंस बेसिकली फॉर सर्जरी आर, कोई ऐसा पेशेंट जिसको प्रोस्टेट के सिम्टम्स हैं एंड मेडिसिन से ही इज नॉट गेटिंग मच बेनिफिट, या फिर मेडिसिन की कॉस्ट उसको 2-3 साल में परेशान कर रही है, या फिर किसी पेशेंट को डिस्पाइट ऑफ टेकिंग मेडिसिन ही इज हैविंग रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ UTI, उसको बार बार यूरिन में हर साल, हर 6 महीने, हर 3 महीने में यूरिन में ब्लड आता है, एंड ही इज हैविंग मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ यूरिनरी रिटेंशन, ही इज डेवलपिंग रीनल इनसफिशिएंसी, पैरों में सूजन आ रही है, आंखों के नीचे स्वेलिंग आ जाती है, क्रिएटिनिन कीप्स ऑन राइजिंग, उसका बढ़ रहा है। तो ऐसे पेशेंट्स में इट्स बेटर कि अब आप मेडिसिन का सहारा छोड़ें और यू शुड कंसिडर फॉर ए सर्जरी नाउ डिपेंडिंग ऑन द प्रोफाइल ऑफ द पेशेंट। अगर एक पेशेंट बिल्कुल फिट है and his prostate is normal, he is not on any antiplatelets, so the best surgery and the gold standard surgery is TURP. It can be done with the monopolar settings or in the bipolar settings. कोई पेशेंट जिसका प्रोस्टेट बहुत ज्यादा बड़ा है, या ऐसा पेशेंट जिसको आपको पता है कि आप एक बार में TURP नहीं कर सकते, एंड एनी पेशेंट हु इज ऑन एंटीप्लेटलेट्स, ऐसे पेशेंट्स को आप होलैप के थ्रू यू कैन ऑफर देम होलैप, लेजर द्वारा प्रोस्टेट का ऑपरेशन कराने की सलाह दी जाती है। बिल्कुल। तो अगेन अगर ये सिम्टम्स है तो डॉक्टर को दिखाइए, और जो भी सही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगा डेफिनेटली वो डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे। एक और हमारे व्यूअर है, उनका सवाल है, जयंत देशमुख है, उनका सवाल है, व्हाट इज द लॉन्ग टर्म आउटलुक फॉर समवन विद BPH हु रिसीव्स अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट? इफ पेशेंट इज taking continuous treatment, medicines अगर वो ले रहे हैं, and if he is not skipping his dose, so there are chances कि he may not require any surgery. There will be many patients जिनको लंबे समय से दवाई लेने के बाद, या those who are continuously taking medicine, वो 10 साल 15-20 साल अपने मेडिसिन पे ही निकाल देते हैं। So it is not that कि हर पेशेंट को, each and every patient will end up in surgery. Many patients they will respond very quickly and very effectively to medicines, and there will be some patients जिनमें बहुत ज्यादा शायद आराम ना मिले, या जिनको मेडिसिन के साइड इफेक्ट से कुछ परेशानी होने लगे, those patients will have to consider for surgery. राइट। कई बार होता है कि जैसे ही ये सिम्टम्स दिखते हैं तो डॉक्टर से संपर्क किया जाता है, और कई बार होता है, जैसा बहुत ही कॉमन है कि बहुत सालों बाद, या जब लगता है कि अब चीजें बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, या जब कोई बताता है इस तरह का सेशन देख के कि अरे ये तो इजीली कंट्रोलेबल है, ट्रीटेबल है, आप डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते, तब जाते हैं डॉक्टर के पास। तो जो इनिशियली डॉक्टर के पास गया और जो बहुत वक्त जाया करके डॉक्टर के पास गया, इन दोनों के ट्रीटमेंट में कितना फर्क आता है? मैम ट्रीटमेंट तो दोनों के लिए सेम होता है, ट्रीटमेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्जरी विल बी सेम, बट दोनों का जो आउटकम होता है दैट विल बी डिफरेंट। एक पेशेंट जो
there is a term which is known as compensated bladder and decompensated bladder. एक ऐसा पेशेंट जो टाइमली आपके पास आ रहा है, उसका ब्लैडर अभी डिकम्पेंसेटेड फॉर्म में नहीं गया, मतलब ब्लैडर फेलियर नहीं हुआ बेसिकली, सो दिस पेशेंट विल रिस्पॉन्ड टू सर्जरी इन ए वेरी बेटर वे. मतलब उस आफ्टर सर्जरी हिज यूरिन फ्लो विल बी वेरी गुड, he will feel significant improvement in his flow. उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में there will be much improvement. और एक ऐसा पेशेंट जिसने काफी सारे साल अपने बर्बाद कर दिए बिफोर टेकिंग ट्रीटमेंट, his bladder is into a chronic retention of urine, तो ऐसे पेशेंट्स में इवन आफ्टर डूइंग ट्रीटमेंट, इवन आफ्टर डूइंग गुड सर्जरी, पेशेंट विल फील लाइक सर्जरी के बाद भी मुझे बहुत ज्यादा आराम नहीं मिला. एंड इसीलिए कुछ पेशेंट्स बोलते हैं कि हमने सुना है कि दूरबीन से ऑपरेशन कराने के बाद ये दिक्कतें रहती हैं, यूरिन अच्छे से पास नहीं होता है या यूरिन का फिर भी ब्लॉकेज रहता है. तो ये जनरली बेसिकली उन लोगों के साथ रहता है जिन लोगों ने अपने ट्रीटमेंट को ऑलरेडी काफी डिले किया या अपने ब्लैडर की तबीयत को इस हद तक खराब किया कि अब ऑपरेशन के बाद भी उसको उतना फायदा नहीं मिलता. बिल्कुल. और इससे पहले कि हम इस सेशन को सम अप करें डॉक्टर, क्या टेक होम मैसेज आप देना चाहेंगे? मेरा एक ही मैसेज है कि आफ्टर 40 to 45 years ऑफ एज आप एक बार अपना स्क्रीनिंग अल्ट्रासाउंड, अपना PSA, और अगर लगे तो एक यूरोफ्लोमेट्री जरूर कराएं. या फिर अगर आपको कभी भी इस तरह के सिम्टम्स, जैसा हमने अभी जिक्र किया, इस तरह के अगर सिम्टम्स आपको कभी भी लाइफ में फील हो रहे हैं, सो आप घर पे ना बैठें, घरेलू उपचार ना करें. बेस्ट है कि एक बार एक यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें. अगर उसको जरूरी लगेगा ही विल प्रिस्क्राइब सम मेडिसिन. अगर उसको लगता है कि नहीं किसी तरह की सर्जरी की आवश्यकता है, देन ही विल सजेस्ट यू अ सर्जरी. प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का मतलब बिल्कुल नहीं कि हर पेशेंट को सर्जरी की जरूरत है. बहुत से पेशेंट्स हैं जो मेडिसिन से भी बिल्कुल ठीक हो सकते हैं. सो अगर इस तरह अगर कोई भी पेशेंट है जिसको लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स है, बेस्ट इज टू अपने आसपास में जो भी यूरोलॉजिस्ट हैं जिन पे भी आपको फेथ है, आप उनको एक बार दिखाएं और यू कैन बी बेनिफिटेड डेफिनेटली. बिल्कुल. तो अगर आपको यूरिनरी कोई भी सिम्टम्स है यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड, तो प्लीज उन्हें इग्नोर ना करें, डॉक्टर के पास जाए. फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी या जो दूसरे सिम्टम्स डॉक्टर ने बताए हैं अगर वो हैं, तो प्लीज डॉक्टर के पास जाए. आप नहीं, आपके घर में अगर इस तरह से किसी को सिम्टम्स हो रहे हैं तो भी एक यूरोलॉजिस्ट के पास जरूर लेकर जाए, ये बहुत जरूरी है. ये सिर्फ आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ को ही बेटर नहीं करता, वो तो जरूरी है ही, आपको बहुत सारे फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन से भी बचाता है. तो जितनी जल्दी जाएंगे उतना बेहतर होगा, तो प्लीज इग्नोर ना करें. थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर अंकुर संगल. इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू. बहुत अच्छी बातचीत आपसे हुई और काफी इंफॉर्मेटिव हमारा ये सेशन रहा. थैंक यू. थैंक यू. And viewers, thank you for your active and excellent participation. And for more information and updates, stay connected on our FB page, Prostate Wellbeing. We are also available on YouTube, Twitter, and Instagram. Thank you. Have a good day ahead. Goodbye.